Hi students, this is Manoj sir. So, how are you all of you? Today we will start the last method of solving linear equations in two variables, that is by Cramers rule. As you can see here, 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 steps to solve the Cramers rule. Let us study all these 5 steps. Steps to solve simultaneous equation by Cramers rule. The first method to solve Cramer rule, you have to calculate D for determinant. The formula for calculating determinant is ABCD. Again, ABCD. All of you, look to me. ABCD. In order to solve this, you have to cross multiply. A multiply by D and B multiply by C. When you multiply A into D and B into C, you will get the value of D. Thus, step number 2, dx means determinant x is equals to C1, C2, B1, B2. Second, dx absolute value open C1, C2, B1, B2, absolute value close. To calculate dy, A1, A2, C1, C2. To calculate dy, A1, A2, C1, C2. Finally, जब आपको x ढूंढना है, x is equal to determinant x divided by d. y ढूंढना है, determinant y upon d. These are the 5 important steps to solve simultaneous equation by Cramer's rule. Let us take one example how to solve the Cramer rule. Y plus 2x minus 19 is equals to 0. 2x minus 3y plus 3 is equals to 0. First, let us arrange this both equation in the standard form of simultaneous equation. In the last lecture, I have already told you that how to arrange any linear equation into standard form. Arrange the linear equation in standard form. SF means standard form. Come on, what is the standard form? Yes, AX plus BY plus C is equals to 0. Or yes, AX plus BY is equals to C. This is the standard form of arranging any linear equation into standard form. Come on then. Yes. Will you arrange this in this standard form? Yes. The first is AX. AX means you have to arrange this 2x in the first position. Don't change the sign. Just change their orders. Plus y is equals to minus 19 will become plus 90, comma 2x minus 3y is equals to minus 3, plus 3 will become minus 3. Again students, yes, focus here. 2x plus y is equals to 19, comma 2x minus 3y is equals to minus 3. Now let us find out the value of a, because to calculate determinant you want a, b, c and d. So a is 2, b is coefficient 1, right, c is 2 and d is minus 3 as its coefficient. Therefore students, write
A value 2, B value 1, C value 2, D value minus 3. Let us find out now D as its determinant. So what is the formula? A, B, C, D. Come on. What is the value of A? 2. What is the value of B? 1. C, 2. And D minus 3. Yes, this will give me what? D. So D is equals to cross multiply 2 into, yes, minus 3. Come on. Minus 3. Yes, and 2 into minus 3. माइनस, जब ये सब यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आएगा, एंड 2 into 1, so 2 into 1, correct, right, 2 into 1 in the bracket. You can write this A into D is equals to B into C in other way also. AD minus BC is equals to 0. Yes, or AD minus BC. Right, so what is your determinant? 2 3s are 6, minus 6, minus 2 1s are 2. So determinant is equals to minus 2 and minus 6 will give me minus 8, students. So here I have calculated my determinant by the formula AD minus BC is equals to 0. Now let us calculate dx, that means determinant x. Determinant x is equals to absolute value open C1, C2, B1, B2. Sir, where is C1, C2, B1, B2? Don't get panic. Let us start to calculate first C1, C2, B1, B2. अब ये कैसे ढूंढना है? राइट, वो इसमें से ही ढूंढेंगे जो हमने दो इक्वेशन ढूंढे हैं, ये जो अरेंज किए हैं उसमें से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 ढूंढेंगे. आई होप सब लोगों को डिटरमिनेंट यस पता चल गया है. कैसे ढूंढना है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू A, B, C, D. A, B, C, D क्रॉस मल्टीप्लाई AD minus BC is the value of determinant. So determinant 2 into minus 3 minus 2 into 1. So determinant is minus 6 minus 2. So determinant is minus 8. Remember, determinant is minus 8. Now let us calculate determinant x. वो कैसे ढूंढना है? Yes, इसी में से ढूंढेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ब्लॉक किया है. इसमें से a1 का वैल्यू पहले ढूंढेंगे 2, b1 का वैल्यू नेक्स्ट 1 और c1 का वैल्यू नेक्स्ट 19, कॉमा इसमें से a2 का वैल्यू ढूंढेंगे. a2 का वैल्यू इज 2, b2 का वैल्यू इज -3 एंड c2 का वैल्यू -3. यस, कोएफिशिएंट्स लेने हैं. a1 मतलब a1 का कोएफिशिएंट 2, b1 का कोएफिशिएंट 1, c1 का कोएफिशिएंट 19, a2 का कोएफिशिएंट 2, b2 का कोएफिशिएंट -3 एंड c2 का कोएफिशिएंट -3. या करेक्ट. अब हम ढूंढेंगे इजीली dx एंड dy. सो dx इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? c1 c2 b1 b2. कम ऑन, राइट. सो c1 ढूंढिए. c1 क्या है इसमें? 19, करेक्ट. c2 is -3 and b1 is 1 and b2 is -3. So here I am going to get determinant x. So determinant x is equals to cross multiply 19 into 3 means 19 multiplied by -3 minus करते हैं according to the yes formula and -3 into 1 -3 ones are -3. Yes, -3 into 1 cross multiplication.
So determinant x is equals to 19 threes are, yes, 3 nines are 27, 57 minus 57, minus minus plus, 3 ones are 3, yes. So determinant x is equals to minus 57 plus 3 is minus 54. So here I got determinant x, here I got determinant, only determinant and determinant x. So now let us find determinant y. वो फाइंड करने के लिए पहले अब ये डिटरमिनेंट के वैल्यू यहाँ पर रफ वर्क में लिख लेते हैं. रफ वर्क डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था? डिटरमिनेंट का वैल्यू -8, यस. और डिटरमिनेंट x का वैल्यू कितना था? डिटरमिनेंट x का वैल्यू था -54. अब हम डिटरमिनेंट y भी फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए यस ये बोर्ड रख करते हैं. Come on, डिटरमिनेंट y फाइंड आउट करेंगे. डिटरमिनेंट y is equals to फॉर्मूला a1 c1 a2 c2. a1 is 2, a2 2, c1 19, c2 -3. Come on, cross multiplication. So determinant y is equals to 2 multiplied by -3 minus 19 multiplied by 2. That will give me 2 3s are 6 minus 6, 19 2s are 38. So determinant y is equals to, yes, -6 minus 8 38 will give me -44. -44. So write down here determinant as -44. Correct? Let us check once. Determinant y is equals to a1 2, a2 yes 2, and then c1 19, and then c2 -3. Correct? So cross multiply 2 into -3 and 19 into 2. Yes. So -44. dy is equals to -44. So can I write here dy -44? Yes, correct. Now let us calculate step number 4, means the value of x. X is equals to dx upon d. That means what is the value of determinant x? -54. Yes, you are right. Upon d -8. Yes, minus cancel. Come on, you know 4 stable. Yes, come on, let us cancel it. 4 2s are 8. Come on, 4 how much are 1s are. अरे ये तो नहीं जा रहा है, तो 2 से सॉल्व करना पड़ेगा. Yes, come on, 2 4s are 8. 2 how much are 2 2s are 4, 1 remain, and 2 7s are 14. So your value of x is equals to 27 upon 4. This is the final value of x. Now let us calculate y. Y is equals to determinant y upon determinant. So what is determinant y? -44 upon, and d is -8, minus plus. Come on, फिर से 2 से इसको रिड्यूस करेंगे. 2 4s are 8, 2 11s are. So your final answer is 11 upon 4. That means your y is equals to 11 upon 4. So you got here 2 solutions of linear equation by Cramers rule. X 27 upon 4 and y 11 upon 4. Please look carefully, and I hope you are copying in your own book also. Yes.
Okay students, let us go with now some exercise questions based on the Cramer rule. Come on, practice set 1.3. If you look your 1.3 exercise, in that you have to just calculate yes, only determinant, like in question number 1, filling the blanks. That is called FIB, filling the blanks. The first one is given like this, like in activity sheets for you. 3, 2, 4 and 5. Yes. And they have given like this, 3 into the box minus box into 4. Yes, is equals to what? Let us calculate now. Let us fill up the box now. So all of you know cross multiplication. 3 into 5. So write down 5 here. 4 into 2. So write down 2 here. Yes. Come on. The final answer. 3 5s are 15. 2 4s are 8. 15 minus 8 is 7. So student, 7 is the answer of determinant. Determinant means only D. D is called determinant. Now in question number 2, you have to find the value of determinant. Find the value of, I am writing in short, D for determinant. D is equals to, some sums are given. There are 3 sums. Let us solve these 3 sums. Minus 1, 7, 2, 4. Come on. Let us calculate D. As you know, D is equals to minus 1 into 4. Yes. Minus 7 into 2. You can put the whole in the bracket also. Minus 1 into 4. Minus 4. Minus 7 2s is 14. So D is equals to minus 18. Did you understand this? Yes. This is question number 2 first. Now question number 2 second. D is equals to absolute value open. 5 minus 7, 3 and 0. So D is equals to cross multiply 5 into 0 minus 3 into minus 7. That will give me 5 zeros are 0 minus minus plus 3 sevens are 21. So D is equals to 0 plus 21 is just 21. आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है किस तरह से डिटरमिनेंट का पहला फिलिंग द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट किया. फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है. इसमें dx, dy, x और y नहीं ढूंढना है, सिर्फ डिटरमिनेंट ढूंढना है. इसलिए हम सिर्फ डिटरमिनेंट ढूंढ रहे हैं. जब क्रेमर रूल पूछा जाएगा तब हम ये 5 स्टेप्स यूज करेंगे. Come on student, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का. नंबर 3 क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन 7/3, 5/3, 3/2 and 1/2. कम ऑन, डिटरमिनेंट ढूंढेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7/3
multiply by 1 upon 2 itself in the bracket minus 5 upon 3. Yes, multiply by 3 upon 2. Come on students, therefore 7 ones are 7, 3 twos are 6, minus 5 threes are 15, 3 twos are 6. Now here 6 and 6 both denominators are same. Take common denominator and 7 minus 15. 7 minus 15 is 8, but minus 8 upon 6. Come on, reduce both the term by 2. 2 fours are 8, 2 threes are 6. So your final answer is minus 4 upon 3. This is the value of determinant. Determinant is minus 4 upon 3. I hope this sum is in fraction and how to find determinant. So students, this is question number 1 and question number 2. Now let us solve the Cramer rule. Means we have to use this all 5 steps now. As earlier हमने पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें क्रेमर रूल से x और y ढूंढना था. अब कुछ और सम्स उसके बेस करेंगे. That is question number 3. Question number 3. 3x minus 4y. 3x minus 4y is equals to 10, comma 4x plus 3y is equals to 5. Yes, ये रफ वर्क के लिए रखेंगे जिसमें हम d कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर dx ढूंढेंगे, फिर आफ्टरवर्ड्स dy. इसके वैल्यूज ढूंढने हैं हमें. चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्या था पहला? Who will tell what was the first step to write? Arrange the terms in standard form. We get. Come on, standard form में अरेंज करेंगे. क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म इसका? ax plus by plus c is equals to 0 or ax plus by is equals to c. Come on, तो अब इसमें और इसमें दोनों में a का वैल्यू क्या रहेगा? राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है ऑलरेडी ये. तो a का वैल्यू 3, कोएफिशिएंट 3, b -4, c 10, राइट, कॉमा, राइट, a b c. इसमें a b c की तो कोई जरूरत नहीं है. इसमें हमें सिर्फ a b और यस इसमें से c और d फाइंड करेंगे क्योंकि पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है. सो c का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 3. करेक्ट? हाँ करेक्ट, राइट. कम ऑन, तो अभी d ढूंढेंगे. d इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है वहां से चेक करो. a b c d. a value is 3, b value is -4, c value is 4 and d value is 3. Multiply now, cross multiply. So 3 into 3, right, you can put in the bracket में भी डाल सकते हैं. -4 into 4 which will give us 3 3s are 9 and minus plus 4 4s are 16. So d is equals to 25. 9 plus 16 is 25. Can we write in rough work? The value of d is 25. Now therefore dx कैलकुलेट करेंगे. dx का क्या फॉर्मूला है? dx का c1 b1 c2 b2. कुछ स्टूडेंट सीधा dx में पहुंच जाते हैं. अभी dx के लिए c1 c2 दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पर? नहीं. तो आपको पहले यस ये इरेज करना होगा. अभी आपको a1 a2 b1 c1 सब वैल्यूज ढूंढने होंगे. सो
a1 कहाँ से ढूंढेंगे? यस, उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, इसको हम बॉक्स बनाएंगे। अब a1 का वैल्यू कितना रहेगा? 3, कोएफिशिएंट 3, b1 कितना रहेगा? -4, c1 कितना रहेगा? 10, राइट। a2 कितना रहेगा? सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोएफिशिएंट 4, यस। b2 कितना रहेगा? 3 एंड c2 कितना रहेगा? जस्ट 5। अब हम आसानी से dx ढूंढ सकते हैं। यस, यस, dx is equals to, come on, absolute value open, क्या वैल्यूज है? c1, c2, b1, b2, dx, c1 कितना है चेक करो? यस, इट्स 10, राइट। c2 कितना है? 5, b1 is how much? -4 and b2 is how much? 3. Come on, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So dx is equals to 10 multiply by 3 bracket -4 into 5 bracket, आप इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। So dx is equals to 10 3s are 30 minus plus 4 5s are कितना होता है? 20. So dx is equals to 30 plus 20 is how much? 50. So dx का यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे 50। ये मैं रफ वर्क में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं इरेज करूंगा तो उसके वैल्यूज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके फोर्थ और फिफ्थ x और y ढूंढने में हमें इजी हो जाएगा, राइट। सो dy ढूंढेंगे अभी। So let us find how to calculate dy. So dy is equals to, therefore क्या फॉर्मूला है dy का? एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन a1 a2 c1 c2, राइट। अभी आपको a1 a2 c2 c2 a1 a2 c1 c2 ये मालूम हो जाना चाहिए। यस, अभी a1 a2 एक बार हमने लिखा था। यस, अभी माइंड में रखना है a1 मतलब क्या है? 3, करेक्ट, राइट। a2 क्या रहेगा? 4, राइट। यस, c1 क्या रहेगा? 10, राइट। c2 कितना रहेगा? 5, वेरी गुड। सो यस, डिटरमिनेंट y is equals to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हर बार अभी a1 a2 c1 c2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। dy is equals to 3 into 5 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट ओपन 10 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 how much? 15, 10 4s are 40. So dy is equals to 15 minus 40 कितना होता है? यस, 25। बट कौन सा 25? -25, राइट। सो यहाँ पे -25 लिखेंगे। अभी x ढूंढेंगे चिल्ड्रंस। x is equals to, क्या फॉर्मूला है x का? dx upon d। यस, that gives us dx का वैल्यू ढूंढो कितना है? 50। यस, अपॉन d का वैल्यू कितना है? 25। 25 1s are 25 and 25 2s are 50. So here I got the value of x 2। अभी हमको y ढूंढना है। y is equals to डिटरमिनेंट y अपॉन d is equals to डिटरमिनेंट y कितना है? यस, -25। गुड स्टूडेंट्स। एंड d 25। So 25 1s are 25, 25 1s are 25. So y is equals to -1। माइनस समझा कहाँ से आया? ये माइनस था इसलिए -1। अगर इधर भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। सो -1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रेमर मेथड। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया क्रेमर मेथड का, एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू स्टूडेंट्स।